The equation of stationary wave is y is equal to 2a sin 2 pi nt by lambda cos 2 pi x by lambda. Which of the following is not correct? Sin theta का जो this angle will be unitless, hence nt upon lambda is unitless. तो n by lambda की डायमेंशन होंगी 1 upon t की डायमेंशन और t की पावर -1. दिस इज नॉट करेक्ट. सेकंड, n की डायमेंशन होंगी लैम्डा बाई टी की डायमेंशन और एल टी की पावर -1. दिस इज करेक्ट. डायमेंशन ऑफ एक्स, जो दिस एंगल 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज यूनिटलेस, तो एक्स बाई लैम्डा इज यूनिटलेस. डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लैम्डा and dimension of lambda is equal to L. Similarly, हम इससे जो फोर्थ को देखें, nt by lambda is unitless, hence nt की डायमेंशन होंगी लैम्डा की डायमेंशन और L. These are correct. So correct option is option number 1. Applying the principle of homogeneity of dimensions, determine which one is correct, where t is time period, g is gravitational constant, m is mass and r is radius of the orbit. The formula होता है force is equal to g m1 m2 upon r square और g is equal to f r square. अगर डायमेंशन वाइज देखें तो m स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट RHS की डायमेंशंस होंगी r स्क्वायर बाई GM की डायमेंशन, r स्क्वायर बाई g की डायमेंशन एफ आर स्क्वायर बाई m स्क्वायर इंटू m. r स्क्वायर से r स्क्वायर क्रॉस कर गया तो दिस इज m बाई f और m की डायमेंशन m, दिस इज f की है m l t की पावर -2, तो ये l की पावर -1 t की पावर +2. दिस इज नॉट इक्वल टू t स्क्वायर, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकंड ऑप्शन, इसमें RHS डायमेंशंस ऑफ RHS विल बी r अपॉन GM स्क्वायर की डायमेंशन, r अपॉन g इज FR स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, 1 अपॉन FR. वन अपॉन ML t की पावर -2 इंटू L, तो डायमेंशन हो जाती हैं m की पावर -1 L की पावर -2 t स्क्वायर. दिस इज नॉट इक्वल टू t स्क्वायर, हेंस दिस इज नॉट करेक्ट. थर्ड, RHS थर्ड का देखें, r क्यूब बाई GM, तो डायमेंशंस होंगी r क्यूब बाई GFR स्क्वायर बाई m स्क्वायर इंटू m. r बाई mr बाई f और m इंटू l
ml (t⁻²) डायमेंशन हो जाते हैं t²। थर्ड इज करेक्ट। एंड फोर्थ को देखें, फोर्थ का RHS है L³ and that is not equal to t². So this is also incorrect. So correct option is option number third. If G be the gravitational constant and U be the energy density, then which of the following quantity has the dimensions as that of the root 2G? F is equal to G m1 m2 by r square और G is fr square, अगर इसको m स्क्वायर डायमेंशन वाइज देखें m1 और m2 की डायमेंशन सेम होगी। U इज एनर्जी डेंसिटी, E एनर्जी बाई V, F फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई L³। G की डायमेंशन है fr स्क्वायर बाई m स्क्वायर और ml(t⁻²) इंटू L स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो G की डायमेंशन हो जाती हैं m⁻⁻1 L3 t⁻²। सिमिलरली U की डायमेंशन होंगी fd बाई L³ और ml(t⁻²) इंटू L बाई L³। ml⁻⁻1 t⁻²। Ug होगा ml⁻⁻1 t⁻² इंटू m⁻⁻1 L3 t⁻²। इसका रूट ले दें, दिस इज रूट L स्क्वायर t⁻⁻4, ये डायमेंशन L(t⁻²) and this is acceleration. जो ऑप्शंस दिए हैं उनकी डायमेंशंस देखें। 1 प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास, dp बाई dx इज प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास से m से और डिवाइड कर दिया। प्रेशर की डायमेंशन होती है ml⁻⁻1 t⁻², dx इज l एंड दिस इज m। तो डायमेंशंस आ जाती हैं L⁻⁻2 t⁻², दैट आर नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Ug अंडर रूट Ug। दिस इज नॉट करेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल W/m इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, W की ml² t⁻², वर्क डन डिवाइडेड बाय मास L² t⁻²। this is also not equal to dimension of root Ug. This is not correct. Energy per unit mass, third, energy per unit mass is E by m or ml² t⁻² by m L² t⁻². This is also not equal dimension of Ug under root Ug. Fourth, this is not correct. Force per unit mass, F by m, force is ml⁻² and m is m L⁻². These dimensions are equal to dimension of root Ug, hence this option is correct. Option number 4 is correct. What is the dimensional formula of ab⁻⁻1 in equation p plus a by v square v minus b is equal to RT? In this bracket, p is added with a by v square
Hence dimension of a by v square is equal to dimension of p. तो a की डायमेंशन होंगी पी वी स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1. In second bracket v is added with b, hence dimension of b will be equal to v. a b की power minus 1 is pv square by v and pv. pv is energy, dimension of energy. प्रेशर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर टी की पावर -2 ml स्क्वायर टी की पावर. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड with list second. Torque, magnetic field, magnetic moment, permeability of free space. Torque A, torque is F into distance R ml t की पावर -2 into L. तो डायमेंशन टॉर्क के होंगे ml स्क्वायर t की पावर -2. ml स्क्वायर t की पावर -2, दिस इज फोर्थ. मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू IBL और B इज इक्वल टू F बाई IL. F की डायमेंशन होती हैं ml t की पावर -2, I इज एम्पियर A एंड दिस इज L. तो M t की पावर -2, A की पावर -1. This third is correct. Third is match with B. Magnetic moment C. Magnetic moment is I into A. A is cross sectional area and I is current. इसका डायमेंशन हो जाती है L स्क्वायर A. L square A is for second, match with second. Permeability of free space. फॉर्मूला है D इज इक्वल टू म्यू डॉट 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर. तो डायमेंशंस ऑफ म्यू डॉट इज डायमेंशन ऑफ एफ स्क्वायर इंटू m1 m2. m1 m2 आर पोल स्ट्रेंथ. तो f की डायमेंशन होती है ml t की पावर -2, आर स्क्वायर की एल स्क्वायर, m1 की AL और m2 की भी AL. तो ये ml t की पावर -2, A की पावर -2 डायमेंशन ऑफ म्यू डॉट. ml t की पावर -2, दिस इज फर्स्ट. तो सीरीज है फोर्थ, थर्ड, सेकंड and first. This third option is correct option. Question number 6. Given below are two statements. Dimensions of specific heat is L square t की पावर -2 k की पावर -1. Dimensions of gas constant is ml square t की पावर -1 k की पावर -1. In light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. So, dimensions of specific heat. S specific heat is Q upon M into delta T. Delta T is temperature difference. Q की dimension energy ml square t की power -2. M is mass and this is temperature K. ये L स्क्वायर t की पावर -2 k की पावर -1. L square t की पावर -2 k की पावर -1. This statement is correct.
Second statement, dimensions of gas constant. Gas constant R is PV upon mu T. PV is energy, ml square T की power minus 2. Mu is mole and T is temperature K. ml square T की power minus 2 mole की power minus 1 K की power minus 1. The second statement is not correct. First statement is correct, second is not correct. Hence, option number 2 is correct. Seventh, if epsilon dot is permittivity of free space and E is electric field, then epsilon dot E square has the dimensions of force 1 upon 4 pi epsilon dot q1 q2 by r square, or dimensions of epsilon will be q square by fr square के इक्वल होंगी. E is force upon Q electric field, और E square is F square upon Q square. Epsilon E square will be Q square upon FR square into F square upon Q square. Q square से Q square क्रॉस हो गया, एक क्रॉस हो गया, F बाई R स्क्वायर. F की डायमेंशन होती हैं एम एल टी की पावर माइनस 2. दिस इज एल स्क्वायर. दिस डायमेंशन विल बी एम की एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2. दिस फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन. The dimensional formula of latent heat is Q is equal to m into latent heat, और L is equal to Q upon m. Q की डायमेंशन ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 एंड दिस इज m. डायमेंशन होंगी m डॉट L स्क्वायर टी की पावर माइनस 2. दिस सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन. Number 9, question number 9. The de Broglie wavelength associated with the particle of mass m and energy E is h upon 2me. The dimensional formula for Planck's constant is lambda is equal to h by 2me under root. तो dimensions, lambda की dimensions is equal to h की dimension upon me के root की dimensions. तो L इज इक्वल टू h अपॉन m और इसका रूट. एनर्जी की डायमेंशन होती हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अंडर रूट, और h अपॉन एम एल टी की पावर माइनस 1. तो h विल बी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 1. This first option is correct. Question number 10. A vernier caliper has 20 divisions or vernier scale which coincides with 19 division on main scale. Least count of the instrument is 0.01 mm. One main scale division is equal to one main scale division, suppose, is x mm. So one VSD, one vernier scale will be 19 into x by 20 mm. तो LC होगा 1 MSD minus 1 VSD, और this is given 1 mm, 0.1 mm
1 ms is x minus 19x by 20, x by 20, x is equal to 0.1 into 22. x की वैल्यू होगी 2 mm. 2 mm, this 2 option is, second option is correct. While measuring diameter of the wire using screw gauge, the following reading were noted. Main scale reading is 1 mm and circular scale reading is equal to 42 divisions. Pitch of the screw gauge is 1 mm and it has 100 circular divisions on the circular scale. The diameter of wire is x by 50 mm. The value of x is LC होगा pitch upon number of divisions on the circular scale. Pitch है 1 mm and सर्कुलर स्केल पर जो डिविजन्स 100, 0.01 mm. LC, तो डाया विल बी मेन स्केल रीडिंग 1 mm plus 42 circular scale reading into LC 0.01, 1 plus 0.42 is equal to 1.42 and this is given x by 50. X is equal to 1.42 into 50, this is 71. Third is correct option. In a vernier calipers, when both jaws touch each other, zero of vernier scale shifts towards right and its fourth division coincides exactly with a certain division on the scale. If 50 vernier scale divisions equal to 49 main scale division and zero error in the instrument is 0.04 mm, then how many main scale divisions are there in 1 centimeter? जो जीरो एरर है that will be 4 fourth division into LC and this is given 0.04. So LC is equal to 0.04 by 4 mm. This is 0.01 mm or 0.001 centimeter. Suppose one main scale division is equal to x centimeter. तो LC होगा 1 main scale division minus 1 vernier scale division, 1 main scale division x centimeter or 1, this will be 49 by 50 into 100, 1 VSD into x, x by 50 centimeter and this is given 0.001 centimeter. X is equal to 0.001 into 50 और 0.05 सेंटीमीटर. एक डिवीजन की वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन्स will be 1 centimeter divided by x. 1 by 0.05 is equal to 20. Option third is correct. The diameter of a sphere is measured using vernier calipers whose 9 divisions of the main scale divisions are equal to 10 of vernier scale. The shortest division on the main scale is 1 mm. The main scale reading is 2 centimeter and
second division of the vernier scale coincide with a division on main scale. If mass of the sphere is 8.3635 gram, the density of the sphere is 2.0, 1.7, 2.2, 2.5 gram per centimeter cube. One main scale division is equal to 1 mm or 0.1 सेंटीमीटर. LC होगा 1 मेन स्केल डिवीजन 1 MSD minus 1 VSD. 1 MSD is 0.1 and 1 VSD is 9 by 10 into 0.1. 0.1 by 10 or 0.01 सेंटीमीटर. जो लिस्ट काउंट होगी दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. नाउ डायमीटर. डायमीटर इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग इज 2 सेंटीमीटर. सर्कुलर नंबर of circular scale that coincide with the reference line, and this is given 2 into LC. 2 plus 2 into 0.01, 2.02 सेंटीमीटर. रेडियस होगी हाफ ऑफ डायमीटर 2.02 by 2, 1.01 centimeter. Density is m by v, m by 4 by 3 pi r cube, 3m by 4 pi r cube. 3 into 8.635, 4 pi की वैल्यू 3.14 and this is radius is 0.01 centimeter का cube. This comes 2.0 gram per centimeter cube. This first is correct option. Least count of a vernier calipers is 1 by 20 n centimeter. The value of one division on the main scale is 1 mm. Then number of divisions of the main scale that coincides with the n divisions of the vernier scale. 1 MSD is equal to 1 mm or 0.1 centimeter. LC is equal to 1 MSD minus 1 VSD or 1 VSD will be equal to 1 MSD minus LC. 1 MSD is 0.1 and this is 1 by 20 n or 20 n 2n minus 1. This is 1 VSD. Suppose required number of main scale is n1. तो VSD के n divisions n into 1 VSD coincide with n1 division of main scale 1 MSD. So n into 1 VSD 2n minus 1 by 20n n1 and this is 1 MSD is 0.1 centimeter. n से n क्रॉस हो गया, this is n1. तो n1 is equal to 2n minus 1, 20 into 0.1 or 2n minus 1 by 2. This third is correct option. There are 100 divisions on circular scale of a screw gauge of pitch 1 mm.
with no measuring quantity in between the jars, the zero of circular scale lies 5 division below the reference line. The diameter of the wire is then measured using the screw gauge. It is found that 4 linear scale divisions are clearly visible, while 60 divisions on the circular scale coincide with the reference line. The diameter of the wire is pitch is 1 mm, तो LC होगा pitch upon number of divisions on the circular scale. Pitch is 1 mm and this is 100, 0.01 mm. List count. 5 0 of circular scale lies below the reference line. This is reference line. यहाँ पर कुछ 0 है and this is 5, 10. तो this is मेन स्केल या रेफरेंस लाइन. इसमें जो एरर होगी दैट इज पॉजिटिव एरर, जीरो एरर जो है. पॉजिटिव जीरो एरर इज प्लस का नंबर दैट coincide with reference line, that is 5 into LC. तो प्लस 5 into 0.01, 0.05 mm positive. The diameter of the wire is main scale reading plus circular scale reading minus zero error. तो मेन स्केल रीडिंग 4 लीनियर स्केल डिविजन्स. तो 1 स्केल डिवीजन इज 1 mm, तो दिस इज 4 mm. CR number of circular scale that coincide with reference line and multiplied by LC, 60 into 0.01 minus 0.05, 4 plus 0.60 minus 0.05, 4.55 mm. This third is correct option. One main scale division of a vernier scale calipers is equal to m unit, and if nth division of the main scale coincides with n plus 1 of vernier scale division, the least count of the vernier calipers is 1 MSD is equal to m unit. N plus 1 VSD are equal to n MSD. So n plus 1 VSD is equal to m MSD n. So 1 VSD is equal to n upon n plus 1 MSD, or n upon n plus 1 into m. mn by n plus 1. तो LC होगा 1 MSD minus 1 VSD, m minus mn by n plus 1, and this comes m by n plus 1. This third is correct option. Question number 17. 10 divisions of the main scale of a vernier calipers coincide with 11 divisions of the vernier scale. If each division on the main scale is 5 units, the least count of the instrument is. So 1 MSD is equal to 5 units, or 11 VSD are equal to
10 MSD or 10 into 5. So 1 VSD will be equal to 10 into 5 by 11, 50 by 11. LC होगा 1 MSD minus 1 VSD. 1 MSD is 5 minus 50 by 11. This comes 5 by 11. This fourth is correct option. If 50 vernier divisions are equal to 49 main scale divisions of a travelling microscope and on smallest reading of the main scale is 0.5 mm, the vernier constant of the travelling microscope is. So 1 MSD is equal to 0.5 mm. 50 VSD are equal to 49 MSD or 49 into 0.5. So 1 VSD is equal to 49 into 0.5 by 50. This is 0.49 mm. So least count या वर्नियर कांस्टेंट equal to LC is equal to 1 MSD minus 1 VSD. 0.5 minus 0.49, 0.01 mm. This fourth is correct option. The measured value of length of a simple pendulum is 20 centimeter with 2 mm accuracy. The time period for 50 oscillations was measured to be 40 seconds and 1 second resolution from these instrument. The accuracy in the measurement of acceleration due to gravity is n%. The value of n is. This is L length and accuracy is delta L 2 mm या 0.2 centimeter. Then this is T 40 second and this is delta T. T is equal to 2 pi L by G time period of oscillations. स्क्वायर कर दें तो T स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर L बाई G. G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई T स्क्वायर. तो मैक्सिमम एरर इन G delta G by G into 100 will be equal to delta L by L into 100 plus 2 into delta T by T into 100. L delta L is 0.2 and this is 20 into 100 plus 2 into 1 by 40 into 100. This is 1 plus 5, 6%, and this is given equal to n%. So n is equal to 6. This third is correct option.